आईपीएससी नेम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आईपीएससी नेम के बारे में बात करें कि आईपीएससी नेम क्या होता है, फिर आईपीएससी नेम के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कॉमन नेम ना भाई, कॉमन नेम, व्हाट द कॉमन नेम्स, यू नो अबाउट द कॉमन नेम्स, ठीक है, दैट नेम विच आर पॉपुलरली इन द गली, गली के अंदर जो हमारे पास क्या होता है जिसको हम ज्यादा बार बार यूज करते हैं, कॉमन नेम दे देते हैं, तो उसकी वजह से बात करें। तो बट हमारा पहला काम रहेगा आईपीएससी नेम लिखना। यू नो अबाउट आईपीएससी नेम की बात करें तो मेरे पास आईपीएससी नेम के लिए रूल है कुछ, उस रूल को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको आईपीएससी नेम आएगा नहीं। तो मेरा पहला रूल है क्या, पहला रूल कहता है कि सिलेक्शन कीजिए। इफ एनी कंपाउंड्स आर गिवन, कोई भी आपको कंपाउंड अगर दिया जा रहा है तो उसका पहले क्या कीजिए, सिलेक्शन। हाउ कैन यू सेलेक्ट, वी सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्टेड ए लॉन्गेस्ट चेन, हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे क्या, लॉन्गेस्ट चेन विथ कंटिन्यूअस, विथ कंटिन्यूअस, ठीक है, वी सेलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन। अगर हमें सेलेक्ट करना हो पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट चेन विथ कंटिन्यूअस, हमारा क्या होना चाहिए, चेन क्या होना चाहिए, लंबी से लंबी कार्बन चेन का पाया जाना चाहिए, विथ कंटिन्यूअस, कंटिन्यू होना चाहिए। वो कंटिन्यूअस कैसे, जैसे मैंने कहा सी, मैंने क्या बताया था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हेलो 4 सर, 4 सर, कार्बन 4, मैंने बता दिया था ना, कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर उसकी वैलेंसी कंप्लीट ना हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। ये सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जहां कंप्लीट नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया यहाँ पे, एक, तो कितने की जरूरत है, 3, और उसको हाइड्रोजन भरपाई कर देगा। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2, तो इसके कंप्लीट करने के लिए कौन यूज करेगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, एक, ठीक है, उसको भरपाई कौन करेगा, 3 हाइड्रोजन। मतलब कर सकते हैं, यू नो अबाउट द, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन चेन, ठीक है, द कार्बन हैव द टेट्रावैलेंट बॉन्ड्स, इट फॉर्म द 4 bonds, but when the bonds are incompleted, these bonds are fulfilled by the hydrogen atoms, ठीक है, because hydrogen form the only for one single bonds, ठीक है, so we use the hydrogen, so we call the hydrocarbon, okay, when I am talking about the C single bond, 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 C and C, what is the carbon atoms, how many bonds in this carbon, only Single. one, ठीक है, तो वी यूज, मुझे पता है ना हम लोग को, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वहां हाइड्रोजन कितना लगेगा, 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना लगेंगे, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना, बताओ यहाँ पे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, जो ये मैं कार्बन डार्क कर रहा हूँ, कितने हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, 1, वाई वी, क्यों कह रहे हो, वाई वी कॉल द 1, बिकॉज इट फॉर्म द 3 bonds आउट ऑफ 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन इसने 3 बना चुका है, एक को भरपाई करेगा कौन, हाइड्रोजन। बाहर की आवाज नहीं ना सुनाई दे रहा है आप लोग को, नहीं सर, ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा क्योंकि मैं कल, जानते हो ना ये, ठीक है। अब देखो कार्बन यहाँ CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये CH, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं सर, एनी प्रॉब्लम्स प्लीज, ठीक है, विदाउट द हेजिटेशंस, ठीक है, यू आस्क्ड मी फ्रैंकली। एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको, 1 घंटे में, मतलब ड्यूरिंग द 1 hours, ठीक है, वी गिव, आई गिव यू 2 hours, बट ड्यूरिंग द 1 hours वी आर कंप्लीटेड टू द haloalkanes एंड haloarenes, okay, it's mean organic part, second term, second chapter, मतलब second books, okay, then after the 1 hours, this time is occurring in 3:30 to 4:30, okay, this times we are discuss about the solid states, whatever you don't have, you have the knowledge, it's not matter, तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज हो, लेकिन मैं सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाऊंगा, आप उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके, मतलब माइंड में ये रखे रहेगा, 1 घंटे में हम लोग, 1 घंटे में क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और 1 घंटे में हम लोग रिवीजन करेंगे जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या आप लोग हमसे बता सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको अगर ना पढ़ाऊं तो काम चल जाएगा, कोई ऐसा चैप्टर, सॉलिड स्टेट सर, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट इस चैप्टर, ठीक है, you everyone have the concept about the solid state, यस सर, okay, so that's good, ठीक है, but today we discuss about, we introduce about the solid state within the hours, within the 1 hours, okay, so if any doubts, yeah, any corrections you want to from this chapters, you ask me frankly, okay, ठीक है, and you Okay, give me sir. also a message,
ठीक है, I give you more times at the night times, it's not matter, we are completed to we have the task, ठीक है, to complete your whole chapters, ठीक है, and I will supply the PDF form your notes, ठीक है, and you write the notes, ठीक है, and you check the notes and your sister, ठीक है, तो ठीक है, please cooperate me, okay, and I'm, ठीक है, what is the IPSC name, the first thing we explain about the selection of the longest chain with continuous, हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है with continuous, कंटिन्यू करके चैन को, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता चल रहा हूं, C single bond 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 C और single bond C. So what is the selection is, selection is that longest chain with continuous, longest chain होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए. So the first, ठीक है, the first is that this is the example, अगर मैं I am talking about the A example 1 2 3, मतलब हमको क्या करना है, when we move left to right या right to left या top to bottom या bottom to top, it's not matter, it's matter we got the longest chain with continuous. Okay, तो 1 2 3 यहां से मैं गया 3 कार्बन की चैन, एक इधर से भी आया तो 3 कार्बन की चैन, ठीक है. अब यहां देखो, दिस इज माय सिलेक्शन, हाउ मेनी सिलेक्शन कार्बन्स 3, बट हियर 1 2 3 4 5, हियर इज द 5 कार्बन चैन, ओके, एंड हियर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब अगर हम स्ट्रेट जाएं तो भी 3 कार्बन की चैन, वी गॉट द 3 कार्बन चैन, but when we move the bent sides we got the 3 carbon chains, one is the eliminate, 1 carbon chains are left from this selection, okay, and those carbon chains which are left from this selection, that is called branch. What's it called? Branch. And those carbon chains which are selected in this state, that is called elk. What it's called? Elk. Elk means carbon chain which are selected in the selection. Okay, so what's my first rule for the IPSC name? My first rule is the IPSC name is the selection. What is the selection? We select our longest chain with continuous. ठीक है, you know about the continuous, continuous में straight chain होनी चाहिए, whatever it's not straight, ठीक है, continue टूटना नहीं चाहिए, straight होना चाहिए, ठीक है. जैसे I take example, अब बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन चैन, which have the longest chain in this chain, which have the longest chain? Straight chain, sir. Straight chain. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, मतलब we got the, ठीक है, straight chains of the only for 5 carbon. It's not matter you go to straight, it's matter you go to the downsides, ठीक है, we got, but we take the easily, we take the straight chain. हम क्या क्या स्ट्रेट चैन ले लिया ना, जब स्ट्रेट चैन ले लिया तो 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? हेलो, हो गया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 डाउन साइड 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब हम वी गॉट द 5 स्ट्रेट चैन, ठीक है, 5 कार्बन स्ट्रेट चैन. ओके, ठीक है, यू आर सेलेक्टेड हियर C single bond C single bond C single bond C single bond C. How many carbon chain is selected here in this case? बताइए, बताइए यहाँ कितने कार्बन चेन स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करिए आप लोग. देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वी गॉट द स्ट्रेट चैन ना. कितने कार्बन की चैन है बताइए, बोलिए. 3 सर. 3 कार्बन की चैन, और जो सिलेक्शन में नहीं है वो क्या कहलाएगा? ब्रांच. Do you know about the, if any compound have the 1 carbon chain, this carbon chain is called, what is the name of the 1 carbon chain? 2 carbon chain. हेलो, बताइए. वो टूथ कार्बन चेन Yes, sir. ठीक है,
Everyone know about this? Yes, sir. So, what is the name of the carbon 1 chain? That compound which have only for 1 chain. Meth. 2 carbon. It. 8. 3 carbon. Prop. 4 carbon. Mute. 5 carbon. Pen. 6 carbon. X. Hex. Okay. Hex. 7 carbon. Have. 8 carbon. 9 carbon. On. And 10 carbon. Deck. Okay. Everyone know about this. Okay. Hello. Yes, sir. No doubt here. No, sir. Okay. And what is the name of the single bond? What's the name of the single bond? N. Double bond. In. And triple bond. And. Okay. This is a basic concept which explain about the basic knowledge related to the IPSC names. Okay. So what's my first tool for the IPSC name? We select the longest chain. You know about the longest chain with continuous. Okay. Everyone know this? Yes, sir. Okay. And the second rule. Okay. And the second is numbering. You know about the numbering. The second one is numbering. What is that numbering? How can you want to the numbering of any selections? मेरी क्या रिक्वायरमेंट है नंबरिंग करना? हम नंबरिंग क्यों करना चाहते हैं? You know what? Numbering का मतलब होता है to explain about the accurate position of the branch and multiple bonds. जो multiple bonds या branch या जो prefix है, जो suffix है, उसका accurate position कहाँ पर है, उसको हम नंबरिंग के द्वारा देते हैं. ओके. हेलो. ठीक है. तो नंबरिंग के द्वारा क्या मेरा रूल होता है? नंबरिंग पे मेरा रूल होता है, पहला रूल, इफ एनी कार्बन कंटेनर्स, इफ एनी ब्रांच have one branch after the selection, if any compounds have the one branch, यदि कोई हम जो सिलेक्शन कर ले रहे हैं, सिलेक्शन के बाद अगर मेरे पास एक ब्रांच हो, या we got the one multiple bonds, अगर हमारे पास क्या हो, one multiple bonds पाया जाए. ठीक है. अगर मैंने क्या किया, सिलेक्शन मैंने किया, सिलेक्शन के बाद क्या हुआ, एक ब्रांच मिल गया या एक मल्टीपल बॉन्ड मिल गया. अगर एक ब्रांच या एक मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो we give less number. आप क्या दीजिए उसको, क्या देंगे आप उसको? less number. Okay. We give less number, such as I am talking about this example, C single bond C single bond C single bond C single bond C, and this is C. सिलेक्शन कीजिए आप लोग, सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन 1 2 3 1 2 3 4. ओके. वी गॉट द स्टेट 4 कार्बन चैन. कितने कार्बन की चैन मिला? हेलो. कितने कार्बन की चैन है? 4 सर. 4 कार्बन. 4 कार्बन. सबको समझ आ रहा है ना? जी सर. ओके. ठीक है. ये देखिए 1 2, देखो एक बार बता रहा हूँ छोटू, तुम लोग को सबको बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक आपकी तभी अच्छी रहेगी जब आईपीएससी नेम आपका वेल क्लियर होगा. अभी तुमसे बोल दिया जाए प्रोपीन से हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, हाउ कैन यू कन्वर्ट? इफ यू डोंट नो अबाउट द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपीन, so how can you convert the 2 bromo propane? So this is a basic concept. How can you know about the conversion of any naming in the structure and the structure in name? So that matter, IPSC is the most important for your organic reactions. So be serious for this. So CS single bond C मैंने बताया कि आपको IPSC नेम का, तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया 1 2 3 4 1 2 3. अब यहाँ ध्यान देना, सिलेक्शन में बात क्या क्या, इस सिलेक्शन में देखो एक ब्रांच आ गया कि नहीं? हेलो. यस सर. वी गॉट द वन ब्रांच ना, और हमने क्या किया, हमको क्या देना है, लेस नंबर. हमें क्या देना है, लेस नंबर. लेस नंबर का मतलब कम नंबर देना है हमको. अब देखो मैं यहां से लेफ्ट
ये राइट, यहां से चलूंगा तो लेफ्ट से राइट, तो ये 1 2 3 4, और राइट से कहां है, लेफ्ट, 1 2 3 4। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ब्रांच कितने पे मिल रहा है हमको, बोलिए 2 नंबर पे, 2 पे, और जब लेफ्ट आ रहा हूं तो 3 पे। तो 3 बताइए पे, which has the less number? कौन इसमें लेस नंबर रखा है, 2 2, so it is the right or it is a wrong. This numbering, wrong, the 2 right numbering and the 3 is a, ठीक है, wrong, because according to rule, if any compounds या if any organic compounds have one branch या one multiple bond, we give less number, हम क्या देंगे उसको, लेस नंबर देंगे। ओके, बात सबको क्लियर हो रहा है, हेलो, यस सर, Yes, sir. ठीक है। अब जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि इफ एनी कंपाउंड्स हैव द मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, इनसाइड ऑफ द ब्रांच, ठीक है, विदाउट द ब्रांच इट हैव ओनली फॉर मल्टीपल बॉन्ड, इफ दिस इज अ मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड रखा है। अब आप लोग बताइए, सिलेक्शन कीजिए इसका, 1 2 3 4, मैंने सेलेक्ट कर दिया, क्या हियर इज अ नंबरिंग इज मस्ट बी, here Yes, the numbering is must be, yes, because it has one one पे, multiple bonds। okay, so we know that when we move left to right, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4, then right to left, 1 2 3 4, when we move left to right, we got the multiple bonds in one, but when we move right to left, we got the multiple bond 3, who is the right, which is the One. right, one is the One. right according to rule, and the second is the Wrong. 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 Okay, everyone know about this, got the Yes, sir. points. Okay. This Yes, point sir. is that if any molecules have the one branch या one multiple bonds, then we use the less number, okay, when we move left to right या right to left, it's not matter, it's matter we give a less number, ठीक है, whatever when we move left to right या top to bottom या right to left, it's not matter, ठीक है, so we give a less number। okay, hello, और डोंट वेरी, Yes, आप sir. एकदम फ्री, मैं आपका वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया हूँ, आप कभी भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आप उसमें एकदम फ्री रहिए, ठीक है। अब देखिए माय सेकेंड रूल, ये हमारा सेकेंड, ये फर्स्ट रूल था। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड रूल। सेकेंड रूल मेरा क्या करता है, सेकेंड रूल नंबरिंग का ही है। मेरा फर्स्ट रूल क्या बोला था, मेरा पहला रूल ये बताया आपको क्या, कि वी गिव अ लेस नंबर, अगर एक ब्रांच हो, एक मल्टीपल बॉन्ड हो, तो हम क्या करेंगे, लेस नंबर देंगे। बट इफ एनी कंपाउंड्स हैव मोर देन वन ब्रांच या मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स, यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो एक से ज्यादा ब्रांच रखे या एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड रखे, ठीक है, अगर एक से ज्यादा ब्रांच रखता है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड रखता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कहते हैं क्या, वी, ठीक है, ठीक है, इफ कंपाउंड हैव मोर देन वन या मल्टीपल बॉन्ड, देन look sum and give less number। हम क्या देखेंगे, उसका सम देखेंगे, सम देखने के बाद क्या करेंगे, उसको लेस नंबर देंगे, क्या करेंगे, लेस नंबर, ठीक है, हम क्या करेंगे, सम देखेंगे और क्या करेंगे, लेस नंबर देंगे, ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, हेलो। तो जैसे आई टेकिंग एग्जांपल, C single bond C single bond C single bond C single bond C single और C and C single bond C double bond C single bond C, ठीक है, double bond C single bond C, okay, I take two example about the multiple bonds and related to the branch, you know about the, ठीक है, when I am talking about the this types of examples, ठीक है, here, ठीक है, we select the selection rule, we take the selection rule 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, we got the state chance, ठीक है,
when we move whatever, ठीक है, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा हमें लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन, 5 कार्बन। और यहाँ पे देखो वी गॉट द straight chance, okay, but I am talking about the this types of example. Okay, when taking about the example of the this, okay, numbering is a must be. Okay, when we move left to right, 1 2 3 4 5, and right to left, 1 2 3 4 5. You know about, okay, when I move about the left to right, okay, we got the left to right. There are two types of branch are the present. One is the number 2 plus, and the second is a number 3. The total is equal to what? The sum of 2 plus 5, 2 plus 3 power equal to 5. But when we move right to left, we got the first branch occur in the 3 positions, and the second branch is occur in a 4 positions, and the sum is 7. So which is the less? When we move left to right, we got the 5, Left to right. and when we move the right to left, we got the 7. So which is the less? 5. So I guess 5 is the right and the wrong. मतलब कि left to right, when we move left to right, the selection is right because it has a less number. So my first point is that, okay, when any compounds have the more than one branch, okay, then we look the sum and then give less number. Okay, and when I'm talking about this types of example, okay, this types of example, okay, when we move left to right, the multiple bonds are the present 1 2 3 4 5 and 6. But when we move right to left, 1 2 3 4 5 and 6. So when we move left to right, we got the multiple bonds present in 1 plus and 4 is equal to 5. But in the case of the left to right, the left to right, we got the multiple bond 2 plus 5 is equal to 7. Which one is the less number? 5? Yeah, 7. 5. 5. I hope which is the numbering is right? 5 plus 7. 5. 5. Why? Why you call this a Because the sum okay. is After the sums, we give the less number. So in the case of the moving the left to right, we got the 5. Okay, but when we move the right to left, we got the 7. So it is a less number and it is a high number. So less number is selected for the numbering. Okay, and those which have a high number, okay, it's not selected. Okay, so everyone got this points. Yes, sir. Okay, and the next rule is for me, okay, if the sum is equal, if those types of organic compounds where we move left to right, yeah, right to left, but the sum is equal, then what we do? Then we do alphabetical order. What we do? Alphabetical order. Text, okay, if the sum is equal, then okay, use alphabetical order. You know about the alphabetical order? Give an example. I am Akash and someone is a Amit, Ankit. So which have roll number first? Which name have the roll number first? Because all the first digits are matched. Everyone the A, but we watch the second digits, second words, K, either M, N. So I hope K is the roll number first. I hope Akash have the roll number first. But the competition is occur between the Amit and Ankit. You know about the K, L, M, N. The first M is the first and the roll number is second, and this is the third. Okay, hello. So wait, I am taking the example. Okay, this is the example CH
ठीक है, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C. When I'm taking about this examples, and when we watch this selection of long waves chain, 1 2 3 4, 1 2 3 4. When we move left to right, we got the 1 plus 3 is equal to 4. Okay, but right to left, we got the 1 plus 3 is equal to 4. So everyone have the sum is equal to 4. So but which numbering is right and which numbering is wrong? So it's depend upon the alphabetical order. When we move left to right, we got the first alkene, and when we move right to left, we got the first alkyne. You know what? Alkyne, ene and ine. तो इन और आइन में सबसे पहले कौन आएगा? आइन सर। बोलिए, आइन आएगा, नहीं होता है, और इन आएगा. तो आई होप लेफ्ट टू राइट इज राइट, लेफ्ट टू राइट our numbering is right, because the first is in, then after ein will come. Okay, but in the case of the right to left, we got the first ein, then in. So the left to right is numbering is right, and right to left is wrong. Okay, hello. Yes, sir. Yes, sir. Everyone got this point? Okay, okay, this is the overall the numberings. ओके, तो वी गिव ब्रीफली, बिकॉज आपके बाद बात किया जाएगा. मैं आपको शॉर्टकट जल्दी लेके खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा बस चाहिए, आपको बहुत डीपली आपको नहीं देना है. ये नहीं कि आपको और चैप्टर, आपको बस इतना आईपीएससी नेम आना चाहिए जितना मैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन और एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी तो कंप्लीटली आईपीएससी नेम राइट कर सके. ओके, हेलो सर. जी, I have a problem, sir. हाँ, टेल मी. Sir, alkane will come first or alkene will come first? हाँ, एल्कीन एंड एल्काइन. ओके, No, alkane and alkene. A-N-E and E-N-E. हेलो, रिपीट सुनाई नहीं अगेन. दे रहा था, सर? नहीं, आप अल्कीन पहले अल्कीन लिखेंगे कि पहले अल्कीन लिखेंगे? नहीं सुन रहा. A-N-E. कॉपी पे लिखो ना यार. ठीक है, हाँ हाँ, कॉपी पे लिखो ना. कॉपी पे लिखो ना. सर बोल रहे हैं कि पहले अल्कीन लिखेंगे कि अल्कीन लिखेंगे? A-N-E, A-N-E. A-N-E, okay, And E-N-E. Which will come first? A-N-E, which comes, of course, N. And Y-N-E also, sir. Y-N-E also, Hello? right? Because you know about the N is a single bond. It is represented by a single bond. When I am talking about the overlappings, you know about the overlapping, the sigma bond is formed by the side-wise overlapping. So head-on overlapping, and the side-wise overlapping is formed by the pi bonds. The first bond is every time generated by the side-wise. So every time when I am talking about the in and ein, first in is comes, and after the in, because the after the sigma bond, the pi bond is generated. You know about in or have the pi bond. So in the case of here, okay, you represent as A and is the in. So it's alphabetical order we use. This is the A and this is the in. According to this A, okay, hello. Yes, sir. हेलो, हाँ, ठीक है. sir. अरे याद है ये A-N-E, एन, और ये क्या है आपका E-N-E. अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें, अगर मुझे आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको एक चीज और बात ध्यान दीजिएगा. ठीक है, जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो ठीक है, व्हेन वी राइट द नॉमेनक्लेचर, जब हम राइट करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, तो अगर एन और इन दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है, तो हम एन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सिर्फ इन को लिखते हैं. समझे? हेलो सर, लेकिन वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में वही तो है बात. हाँ हाँ, देखिए, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या पढ़े आपने, इन पढ़ा, E-N-E. ठीक है. ओके, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज Y-N-E. हेलो, तो डबल बॉन्ड नेग्लेक्ट कर देंगे? नो 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 नो, ठीक है, नेवर नेग्लेक्टेड, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड्स. व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड्स आर द प्रेजेंट,
we numbering, we nominate in the, ठीक है, in the case of the nomenclature we are giving the number only for double bond and triple bond, but in the case of alkane single bond there are no numbering required because every atom is have always single bond. Okay, every atoms are consist of the single bonds, so there are no representation of the, okay, alkanes when the multiple bonds are the present. When I am talking about the propene, प्रोपीन, यू नो अबाउट द प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब, प्रोप का मतलब 3 कार्बन की चैन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्या ये सिंगल बॉन्ड को हमने क्यों नहीं लिखा? ओके, हेलो, बिकॉज ENE इज डोमिनेटिंग। हाँ, नहीं देखो, ये ऑलरेडी अगर ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा तो क्या ये प्रोपीन बनेगा? क्या ये डबल मतलब रहेगा? लेकिन हमें पता है सिंगल बॉन्ड इज बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड इज द मस्ट बी प्रेजेंट, देन आफ्टर डबल बॉन्ड आर फॉर्म, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स मीन पाई बॉन्ड्स इज फॉर्म, एंड देन आफ्टर व्हेन द पाई बॉन्ड इज 2 दैट इज कॉल्ड द आइन। तो मैं यूज किया क्या आपको, द इफ द सम इज इक्वल, if the sum is equal we use the alphabetical order, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला था ना अभी, ठीक है, अंकित, आकाश, ठीक है, और अमित, अगर मैंने बात किया, ठीक है, अगर मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले, और एक कोई रहेगा क्या, सुनील, ठीक है, अगर मैं इन लोग की बात किया जाए तो मैंने एक साइड मैंने आपको क्या लिखा, एक साइड लिखा एन, एक साइड लिखा क्या इन, और एक साइड क्या लिखा मैंने आपको आइन, मतलब वन साइड वी राइट द एन, इन एंड आइन। तो व्हेन आई एम टॉकिंग मतलब कि मैं क्या लूंगा, पहला बॉन्ड मतलब पहला चीज ए, ये ए से है, और ये ई से है, और ये वाई से, आइन है, वाई है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसको लिखेंगे आप बताइए? एन। एन को क्यों लिखे आपने? क्योंकि ए पहले आता है किससे और वाई से। ए आया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया तो सब लोग अंडरस्टूड रहते हैं, क्यों? अब तुम्हें बताओ, एक बार बताओ, हम बेंजीन को इस तरह लिखते हैं ना, वी राइट द दिस बेंजीन एंड दिस टाइप, बताइए बेंजीन को इस तरह लिखते हैं कि नहीं आप? लिखते हैं। लेकिन भाई एक बात बताइए आप लोग, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसका हाइड्रोजन क्यों नहीं दिखाते हैं? ये हाइड्रोजन हम क्यों नहीं दिखाते हैं? Why cannot represent the hydrogen? If this is understood, so you know that we know that when the formation of the overlapping of the takes place according to valence bond theory, when the formation of the take a bonds according to modern concept of valence bond theory, when the head-on overlapping of the take place, so always any molecules have the first goes to the head-on overlapping, then it's form the sidewise overlapping. So when I am talking about the alkene, if you know about the alkenes, okay, alkenes, the first it's form the head-on overlapping, then it's form the sidewise overlapping, okay, the sidewise overlapping, after this overlapping it's form, this is the sigma bond and this is the pi bond, okay, hello, yes. Hello, so yes, in the case of here n is understood, but which conditions? That condition where the multiple bonds are the present. But if the multiple bonds in and both are the present, both are the so in the nomenclature, because both are the different, because it have a 1 pi bond, it have a 2 pi bond. So in the case of the in and ein, both are the represented in nomenclature. When I am talking about the these types of example, okay, C double bond C H, single bond C, triple bond C H. Okay, I am talking about this types of example. Okay, what is the nomenclature of this? What the name? With the first, the selection of longest chain, and the second numbering. So numbering, in the case of the numbering, when we move to here 1 2 3 4 1 2 3 4, when we move left to right, we got the 1 and 3 टोटल। अभी देखिए इक्वल में यही बताया हूं, इक्वल हो जाएगा, हम इस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे हमको पहले इन आ रहा है और राइट से लेफ्ट आने पे हमको आइन मिल रहा है, तो यहाँ से इन और यहाँ से आइन, तो हम कहेंगे दिस नंबरिंग इज राइट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। तो बस इट इज डिपेंड अपॉन द नोमेनक्लेचर एंड अकॉर्डिंग टू माय नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक, ठीक है। मैं अगर ट्रिक आपको देता हूं तो ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि मुझे आपको बहुत ब्रॉडली लेके नहीं चलना है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सिलेबस भी देना है। मेरा ट्रिक जो है उसको याद कर लीजिएगा, पी बॉक्स। व्हाट आई से, पी बॉक्स। आप इस पे पूरा आईपीएससी नेम, आईआईटी नीट पूरे एग्जाम का आप आईपीएससी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर्स रूल्स, यू नो अबाउट, अच्छा what do you understand about the nomenclature? What is Naming. it? Understand naming. How can you know about the naming? You know about the naming, explain about the representation where the arrangement of the molecules of the respectively occur, where the alkene are first या alkyne are first, या which types of bonds are the present, ठीक है। and prefix and suffix, everyone know about this. What is the prefix and the suffix? It is depend upon the periodicity, which have the higher periodicity, that is act as a suffix, and which have the low periodicity, ठीक है, that is called prefix. So here we give the explanation. The first we write the prefix. We write the prefix. If we got the prefix, अगर मेरे पास है ब्रांच में, अगर मुझे कोई ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें प्रीफिक्स है, तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं लिखूंगा ब्रांच। ब्रांच, वी राइट द ब्रांच, लेकिन ब्रांच इज आल्सो ए कार्बन चेन, तो कार्बन चेन इज एल प्लस एडिंग द YL, इट्स नोन एज एल्किल। जैसे आई एम टॉकिंग मेथिल, प्रोपिल, हेक्सिल, ब्यूटिल, इल। इल का मतलब क्या, ब्रांच, इट्स द कॉल्ड ब्रांच, ओके। एंड देन एल्क, एल्क इज द मोस्ट सेलेक्टेड ब्रांच, ठीक है। when are selected in the branch, that is called elk. And then after bond and then suffix. But all the arrangement, if the suffix is more than one, जैसे मैंने कहा कि if any compound have the fluoro and bromo, then which is the first? So of course, ठीक है, bromo is the first because it is depend upon the alphabetical order, okay, ठीक है। when we write the nomenclature of any compounds, we first thing you noted that, ठीक है, if any compound have more than one prefix, we use the alphabetical order. When if any compound have more than one branch, we use the alphabetical order. जैसे I am talking about the ethyl, ठीक है, methyl, ठीक है, ethyl। अगर methyl आता है, ethyl आता है, तो पहले कौन आएगा? Which one first? क्या सर? Which one first? If I am explaining about the ethyl and methyl, which one is first? Ethyl. Ethyl. So okay, it's depend upon the alphabetical order, okay. But if the only for one types of, if only for one types of branch are present in many types, we use the di, tri, tetra, penta. Everyone know about this? Hello, Yes sir, we know. all of you. Yes sir. Okay. And elk, eth, meth, pro, but, hex. Bond is also represented in and ein, ठीक है। अगर represent in ein, अगर in and ein, ठीक है, in and ein अगर आ जाता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। सफिक्स इज डिपेंड अपॉन द पीरियोडिसिटी, ठीक है, किस पे सफिक्स हमारा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको ये याद हो गया? हेलो, Yes सर। Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन लगाया जाए इस पे। हाँ सर। तो ये आपको समझ आया जो एल्केन और एल्कीन के बारे में बात पूछे आप? जी सर। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं अब। चलिए पहले भी मैं सिंपल दे रहा हूं आपको, सिंपल में नाम लिखते हैं। पहला मेरा काम क्या है, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग्वेज चैन। हमारा काम है क्या, पहले सिलेक्शन करना। तो मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया, लॉन्ग्वेज चैन। क्या हियर द नंबरिंग इज मस्ट बी, हियर द नंबरिंग शुड बी या मस्ट बी इन द फर्स्ट केस? कहीं से भी कर ले सर। हेलो, हाँ, तो वी आर जो नॉमेनक्लेचर बॉक्स,
we call the box. The first we write the prefix, but this compound has the prefix? No. Branch? No. Elk? Yes. Elk. How many elks? How many elks in this carbon chain? 3. 3. So that is called prop. And the second is bond. Which type of bond it has? Only for single bond. So prop plus ane. Yeah, it have a suffix. It has suffix. No. No. So equal to propane. Okay. And here we select the selection 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. These are sections of the longest chain. Okay. These are selections, and this is a branch. Okay. So the first numbering is must be yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Everywhere when we move left to right or right to left, the sum is equal, and the sum is equal, and the branch is also equal. It also is ethyl, methyl, and this is also methyl. So though both branches are the same, so we are free. When we move left to right or right to left, it's not matter. Okay. Hello. Yes, So sir. then we have the prefix. It has the prefix. It has the prefix. It has prefix. No. No. And branch? Yes. 2. How many branch? 2. Yeah, both branch are same or different? Same. 2, 2 Both dimethyl. branch. Okay. 2, 2 dimethyl. Why use the di? Di used for the 2 types. And why use the 2, 2? Because in the case of the IPSC names, we use in word form and numerical form. Digit and word both are the representation of the position of the branch. Okay. So 2, 2, it's a representation of the numerical value, and the di is represented, both are the same. Okay. Dimethyls and the propane. Okay. Everyone got this? Yes, sir. Tell me about this name. What's the name about this? Hexane. Hexane. 2 methyl करते हैं. हाँ. No. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. We got the 8 ends for the only for 5 branches. One is the branch. So 1, 2, 3, 4, 5. 2 methyl pentane. So everyone know about this? ठीक है. अब राइट कर लेंगे आप लोग आईपीएससी नेम. Yes, sir. बोलिए. तो ये माइंड में रख लीजिएगा. ठीक है. तो ये आईपीएससी नेम इतना नॉर्मल आपको पता चल जाएगा. ठीक है. आप कर लेंगे. ओके. अब हम आते हैं क्या अपने पॉइंट्स पे रिलेटेड. डू यू नो अबाउट द व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द Tell me, what the IPSC name of this compound? If this is a given, if it is given, then what is the IPSC name of this? बताइए. First thing, we open the structure. You know about the center atom is C, and this is CH3 and CH3, CH3, C. Yes, C, single bond Cl, CH3 and CH3. This is the open structure of this compressed molecular formula of this compound. So the first is goes to the selection. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Okay, 1, 2, 3, 4. We got the only for state chance. Okay, there are 4 carbon chance. Okay, the first numbering because it have a prefix. The prefix are very close to this carbon chain and the branch also. So we nominate this 1, 2, 3, 4. So we use the box. Pehla, the first prefix. It has a prefix.
It have the prefix. Yes, sir. Chloro. हाँ, chloro. But which position? 2 chloro. Okay. फिर उसके बाद branch. What the branch? 2, 3. So 2 comma 3 comma 3 tri methyl 1 2 3 4 butane. But plus N are equal to butane. This is the IPSC name. You know about the if the structure are converts into words, the word is also converts into. ठीक है, अगर आपको क्या हुआ कि नाम दिया है और नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले क्या करिए, जो इसमें ब्रांच का सिलेक्शन है मेन ब्यूटेन. ब्यूट मतलब Single. 4 कार्बन 3, 4. और 2 पे क्या है, 2 पे लगा दो क्लोरो और 3 फिर 2 पे क्या है, कार्बन की चेन का कितने 3, तो ये हो जाएगा ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो एवरीवन गॉट दिस पॉइंट. So I give a first task to all of you. The first task is that, ठीक है, you have the NCERT book या Newton book. Yes, sir. ठीक है, you complete all the IPSC name. Okay, you complete all the IPSC names. Okay, only for those compounds which have without the aromatic compounds, because here we discuss about the aromatic compounds. Without the aromatic compounds, you write all the IPSC name. Any problems, okay, send me photo on the WhatsApp number. Okay, then I solve you. Because during the class times you consult me about the doubts. Okay, we have now left, we have no more times to we are debate about this, but you give me, okay, on the WhatsApp I reply you what this if कहते हैं आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो सीधी सी बात है, मैं आपको कॉल कर लीजिएगा, कॉल पे पूछ सकते हैं आपको. ठीक है, ओके. Yes, sir. हेलो, तो टुडे क्लास इज, ठीक है, ओवर. ठीक है, बिफोर आई 10 सेकेंड बिकॉज माई मोबाइल बिकम डिस्चार्ज. Sir, So next that's my class. Next class will be running 3:30 and 3:40, to okay. the 4:30. Okay, so everyone interested to the teach here, study here? 3:40, sir, na? 3:30. Oh, gotcha. 30. Any problem? No, sir. 3:30 to 4:30. Yes, 3:30 to 4:30. Okay. Thank you. Before 10 minutes, before 4 minutes.